हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ओपीएससी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जनरल अवेयरनेस पेपर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जहां हम क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक डिस्कस करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैच्ड पेयर? गुलाब सिंह जम्मू, दुलीप सिंह पंजाब, शाह सुजा रोहिलखंड, वाजिद अली शाह अवध। जो गुलाब सिंह थे वो जम्मू कश्मीर में थे, सो ये सही है। दुलीप सिंह पंजाब में थे एंड वाजिद अली शाह अवध में थे। बट ये जो शाह सुजा, ये शाहजहां के सन थे, वो बंगाल एंड ओडिशा, नॉट रोहिलखंड। बंगाल एंड ओडिशा, बंगाल ओडिशा के रूलर थे, जिनका कैपिटल कहाँ था? कैपिटल था ढाका, जो अभी बांग्लादेश में है। सो ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नॉट पूछा है। देन क्वेश्चन नंबर 22। कृष्ण राजा वुडेयर मैसूर, नॉट पूछा है, नॉट मैच पेयर। निजामुल मक असफ जहा हैदराबाद, गोविंद चंद्र चाचर, जमान शाह पेशवर। ये कृष्णा राजा उदयर मैसूर में थे, निजाम ऑब्वियसली हैदराबाद, जमान शाह पेशवर। बट ये जो गोविंद चंद्र यूपी साइड में थे, नॉट चाचर। So option number C is the correct answer. Then question number 23. Clause 43 of the Charter Act 1813 of the British Parliament concerned law and order situation in India, education in India, foreign policy and trade relation in India, initiation of Indian Renaissance. आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एजुकेशन इन इंडिया। जो चार्टर एक्ट आया था 1813 में, वो एजुकेशन, इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट किया। क्वेश्चन नंबर 24। फॉर कॉलोनियल टाइम्स इन इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन ए प्रॉपर ऑर्डर फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट? मुंसिफ कोर्ट, सदर अमीन्स कोर्ट, जिला कोर्ट, सदर दीवानी अदालत, सदर दीवानी अदालत, मुंसिफ कोर्ट, जिला कोर्ट, सदर अमीन्स कोर्ट। मुंसिफ कोर्ट, जिला कोर्ट, सदर अमीन्स कोर्ट, सदर दीवानी अदालत, सदर दीवानी अदालत, सदर अमीन्स कोर्ट, जिला कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले मुंसिफ कोर्ट, देन सदर अमीन्स कोर्ट, देन जिला कोर्ट, देन सदर दीवानी अदालत। देन क्वेश्चन नंबर 25। भांगी वाज ए क्लान दैट रूल्ड ओवर ए पार्ट ऑफ दक्कन, रोहिलखंड, कावेरी डेल्टा, पंजाब। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, वेस्टर्न पंजाब में था रूल। एकम सत विप्रह बहुधा वदंती कम्स फ्रॉम द महाभारत, रामायण, वेदस, ब्राह्मण्स। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेदस, जो कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 27। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज द रिजल्ट ऑफ an effort by the colonial ruler to destroy India's economy, India's industry not being able to adjust to modern industrial production, lack of scientific and technical education in India, India not having easy access to petroleum sources. Answer होगा option number A, that is an effort by the colonial rulers to destroy India's economy. Then question number 28. Which of the combination is correct? Mohandas Karamchand Gandhi was the editor of the Pratap? No. Binayak Damodar Savarkar founded the National Herald. Jawaharlal Nehru founded the Free India Society. Madan Mohan Malviya was the chairman of Hindustan Times. Ganesh Shankar Vidyarthi wrote the Hind Swaraj. ये था ऑप्शन ए। देन ऑप्शन बी, मोहनदास करमचंद गांधी wrote the Hind Swaraj. Binayak Damodar Savarkar founded the Free India Society. Jawaharlal Nehru founded the National Herald. Madan Mohan Malviya was the chairman of Hindustan Times. Ganesh Shankar Vidyarthi was the editor of Pratap. Then question option C, Mohandas Karamchand Gandhi wrote the Hind Swaraj. Binayak Damodar Savarkar founded the Free India Society. Jawaharlal Nehru founded the National Herald. Madan Mohan Malviya was the editor of the Pratap. Ganesh Shankar Vidyarthi was the chairman of Hindustan Times. Mohandas Karamchand Gandhi wrote the Hind Swaraj. Binayak Damodar Savarkar was the editor of the Pratap. Jawaharlal Nehru founded the National Herald. Madan Mohan Malviya was the chairman of Hindustan Times. Ganesh Shankar Vidyarthi founded the Free India Society. आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनदास करमचंद गांधी wrote the Hind Swaraj. Binayak Damodar Savarkar founded the Free India Society. Jawaharlal Nehru Herald. Madan Mohan Malviya was the chairman of Hindustan Times and Ganesh Shankar Vidyarthi was the editor of the Pratap. So option number B is the correct.
Then question number 29. Which ruler was known as Bat-Sikan? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर शाह मीरी, सिकंदर लोदी, औरंगजेब. आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिकंदर शाह मीरी. उनको बदसिकन बोला जाता था बिकॉज वो आइडल ब्रेकर थे. आइडल ब्रेकर. The five principles of Panchashil are substantially a reiteration of the UN Charter, the Charter of the League Nation, the Treaty of Berlin, the Protocols of Zion. it मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बट अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज द यूएन चार्टर. बट श्योर होके मैं आंसर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा. देन क्वेश्चन नंबर 31, फ्रॉम व्हिच, बट ये थोड़ा डाउट था. Then from which constitution the Indian constitution borrows the provision of single citizenship? Australia, Canada, USSR, British. Answer होगा option number D, that is British. Question number 32. Which of the following has given the power by the Constitution of India to impose reasonable restriction on the fundamental rights? President of India, Parliament, Supreme Court, High Court. Answer होगा option number B, that is Parliament. Then question number 33. Article 21A refers to rights to freedom, right to religion, right to education, right against exploitation. Answer होगा option number C, that is right to education. Which of the rights deal with the right to vote and to be elected in India? Fundamental rights, natural rights, constitutional right, legal right. Answer होगा option number C, that is constitutional rights. Which of the following can abolish a state legislative council? Parliament, governor, president, state assembly. Answer होगा option number A, that is parliament. Which of the following article of the Constitution of India refers to proportional representation by means of the single transferable vote? Article 53, Article 54, Article 54A, Article 55(3). Answer होगा option number D, that is Article 55(3). Question number 37. In which year did the Constitution 99th Amendment Act come into force? 2013, 2014, 2015, 2016. ये जो एक्ट था वो 2014 में आया था, बट 2014 बट came into force then 2015 13th April. सो इसका करेक्ट आंसर 2015 होगा, ना कि 2014. Which of the following statement is not correct? The chairman of the UPSC shall be ineligible for further employment under the Government of India of any state. A member of UPSC is eligible for appointment as chairman of the UPSC or chairman of any state commission. The chairman of a state commission shall be eligible for appointment as a member or chairman of the UPSC or a chairman of any other state commission. A member of the state commission will be eligible for any other employment under the Government of India or of a state. Answer होगा option number C, that is a chairman of a state commission shall be eligible for appointment as a member of chairman of the UPSC or a chairman of any other state commission. Question number 39. Which of the following amendments has repealed Article 19(1)(f) and 31, 42, 43, 44, 73? Answer होगा option number C, that is 44th amendment. Who among the following appoints Controller and Auditor General of India? President, Prime Minister, Chief Justice of the Supreme Court, Finance Minister of India. Answer होगा option number A, that is President. That's all. Thank you so much for watching. नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 41 से 60 तक डिस्कस करेंगे. ऑल द वेरी बेस्ट.